Now, coming to the analysis of this poem, the first verse of the first stanza reads, I taste a liquor never brewed. Now, the very first statement is a paradoxical statement. Why is it paradoxical statement? Because liquor, we do not get liquor without brewing. Now, brewing is a process of making liquor. You understand? मतलब शराब जब बनाई जाती है उस प्रोसेस को ब्रू बोलते हैं, बट शी सेज कि मैंने ऐसी शराब पी है जो कभी बनी ही नहीं है. So that is a paradoxical statement. I have tasted a liquor which has never been brewed. This is enough proof for us that this is not the liquor that mostly people would drink, because she has drank something which has never been brewed, जिसको कभी बनाया ही नहीं गया, जिसको कभी लाया ही नहीं गया उसके पास, but still she has drank this liquor. और इस liquor के कुछ special features हैं, कुछ qualities हैं जो इमली डिकिंसन हमें आने वाले वर्सेस में बताएगी. For example, वो दूसरे वर्स में कहती है, From tankard scooped in pearl. ट्रैंकर्ड जो वर्ड यूज किया है, देखो यहां पे भी इसमें कैपिटल टी यूज किया है. ये उसकी कैपिटलाइजेशन की हैबिट थी कि वो शी वुड पुट कैपिटलाइजेशन बिफोर सम वर्ड्स, और कहता है ये टैंकर्ड जो होता है वेसल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कप, काइंड ऑफ अ वेसल जिसमें शराब डाली जाती है. स्कूप्ड इन पर्ल. पर्ल, मोस्टली व्हेन पीपल ड्रिंक, दे वुड पुट स्नो, बर्फ डालते हैं गिलास में फिर लेते हैं. She says that the liquor that I have tasted has been scooped in pearl. That is one of the features of the liquor. There are two now features of this liquor which is tasted by Emily Dickinson. One is that it has never been brewed. Second, that it has been scooped in pearl. Not all the Frankfurt berries yield such an alcohol. और जो अल्कोहल मैंने टेस्ट किया है, the alcohol which I have tasted, there are no berries, there is not a place, not a thing, not an object, not a fruit in this world which can yield such an alcohol. इसकी बात ही कुछ और है. And now the very two first verses, arguments in favor of this alcohol suggest that कि इस तरह का alcohol कहीं भी नहीं मिलेगा, which is scooped in pearl and which is never brewed. So obviously Frankfurt is the name of a place and berries is the name of fruit. कहता कोई भी दुनिया की ऐसा फल नहीं, ऐसा फ्रूट नहीं, ऐसा ग्रेप नहीं, ऐसा वाइन नहीं जो इस तरह की जो है लिकर बनाए, इस तरह का अल्कोहल बनाए, which have been tasted by me. That was the first stanza, and this first stanza is full of paradoxes when she says कि मैंने इस तरह की शराब पी है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी. So now the people would think कि फिर उसको कहाँ से मिली इस तरह की शराब. Now coming to the second stanza of this poem, it reads, Inebriate of air am I. Inebriate means a drunkard, but she says of air. Inebriate is a word जो हम शराबी के लिए लगाते हैं, जो बहुत शराब पीता हो, जो बहुत नशा करता हो. लेकिन she says that inebriate of air am I. मैं inebriate तो हूं लेकिन अल्कोहल की नहीं. Of air am I. And again we will find in this verse the special feature of Emily Dickinson, the dashes. Inebriate of air dash am I. And then again a dash. That is the quality of Emily Dickinson's poem. मैं शराबी हूं but किसकी? Of air. And then in the second verse she says, and debauchee of dew. This word debauchee means, a person who indulges in sexual activities excessively. Now there are two important things. The imagery is negative in the first verse also and in the second verse also. The two words that she has chosen here, she has used here, both refer to negative adjectives. But then she refines them with the use of the word air and the dew. If she has a habit of, if she's a drunkard, she's not a drunkard of wine, and if she has a habit of indulging excessively in the sexual activity, it is not actually the sexual activity, but it is in dew. So the air and the word dew would reduce that negative imagery which are implied by the words like inebriate and debauch. Reeling through endless summer days from inns of molten blue. Now what do I do? Reeling through summer days. जो फिरता रहता है, एक ऐसी शराबी जिसने शराब पी, घूमता रहता, फिरता रहता, किसी की कोई परेशानी नहीं. कहता ऐसा ही मैं भी करती हूँ.
बट द लास्ट वर्स अगेन, इसमें जो मोल्टन ब्लू है, फ्रॉम द इंस ऑफ मोल्टन ब्लू. नाउ दिस मोल्टन ब्लू इन पोइट्री इज रेफर्ड टू स्काई, Now there are, see, the imagery is very negative. The words chosen are absolutely negative adjectives, but when they are suffixed by the words like air, like dew, like molten blue, so they give a new picture to us. ये फिर वो नहीं रहते. Inebriate का मतलब फिर वो नहीं रहता जो इसका एक्चुअल मीनिंग है. डिबाचे का मतलब भी वो नहीं रहता जो इसका एक्चुअल मीनिंग है. और दरबदर फिरने का भी वो मतलब नहीं रहता कि जो इसका एक्चुअल मतलब है. अब ये जो दरबदर फिरती है वो कहाँ फिरती है? फ्रॉम द इंस ऑफ मोल्टन ब्लू, आसमानों में, उन सरायों में जो आसमानों में है. So air, dew and molten blue takes the explanation, takes the meaning of this verse to a next level, to a different level, not to a level to which we must understand it. So that was the second stanza. Again, the second stanza would refer to the imaginative power of this Emily Dickinson, maybe to the isolation of this Emily Dickinson. She says that she would be very much similar to rest of the people, those who drink wine, those who indulge in sexual activities, those who indulge in reeling, but she also indulges in the similar kind of activities, but her activities are not like those of others. उसकी जो activities है वो बहुत different है. वो उनकी तरह नहीं है जो बाकी लोग जो है इन चीजों में indulge होते हैं. She indulges in them in a different level, or at a different level, at a different stage. That was this poem. Now coming to the third stanza of this poem, it reads, when landlords turn the drunken bee out of the fox blue's door. Now landlords is kept in inverted commas. She knows who this landlord is, and the word fox blues is a reference to a wild flower, to a wild beautiful flower. And she says, जब एक वक्त आता है कि drunken bee, अब ड्रंकन बी जो है एक इमेजरी है कि एक बी, मधुमक्खी जो है जब फूल पे जाती है उसका सारा रस लेती है और कोई उसको देखे, उसका लैंडलॉर्ड उसको देखे तो उसको वहां से भगाता है. इवन जो है बी एक मोमेंट पे वो ड्रिंकिंग छोड़ देती है, उसकी भी एक लिमिट है. लैंडलॉर्ड कुड आल्सो रेफर हियर टू गॉड. फॉर एग्जांपल, एक मधुमक्खी को जंगल से कौन भगाएगा? एक वाइल्ड फ्लावर से कौन भगाए? क्योंकि फॉक्स ग्लो जो है ये डोमेस्टिकेटेड फ्लावर नहीं होता है, ये हम घरों में नहीं लगाते, ये यूजुअली जंगलों में लगता है. और कहता है कि जब वो मधुमक्खी वहां से उसका पूरा रस पीती है और उसको वहां से भगाया जाता है, उसको वहां से भगा दिया जाता है. When butterflies renounce their drams is a reference to a unit of mass, जिसमें तोली जाती है कोई चीज. कहते जब बटरफ्लाइज जो है वो भी घूमती हैं, फिरती हैं, और फिर वो भी दे रिनाउंस देयर ड्रीम्स. आई शैल बट ड्रिंक द मोर, मैं नहीं करने वाली ऐसा, मुझे नहीं कोई भगाने वाला ऐसा. ड्रंकन बी को भगा दो, बटरफ्लाइज भी रिनाउंस कर लें, बट आई विल कंटिन्यू टू ड्रिंक, बिकॉज शी इज नॉट ड्रिंकिंग इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड. क्योंकि वो सही में नहीं पी रही है, इसलिए इसका मतलब she says that I'll continue it more, because what she is actually drinking is not an intoxicant, is not alcohol, is not something that will affect her health, affect her hunger, affect her thirst. How long shall she be drinking? Till seraphs swing their snowy hats and saints to windows run. मैं तब तक पीऊंगी जब तक ना फरिश्ते भी झूम उठे, जब तक ना सिर्फ्स भी झूम उठे, और जो सेंट्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, अपनी गुफाओं से बाहर निकलें, अपनी केव से बाहर निकलें, खिड़कियों पे आ खड़े हों. All the saints to see the little tippler leaning against the sun. Tippler is a reference to domestic pigeon. वो कबूतर जिसको हम डोमेस्टिकेट करते हैं. अब जो भी परिंदा डोमेस्टिकेटेड होता है ना, वो ज्यादा ऊंचा उड़ता नहीं है. इट डजंट फ्लाई हाई, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज बर्ड्स व्हिच वी डोमेस्टिकेट. सो अगर डोमेस्टिकेटेड पिजन जो है वो घर से उड़ेगा तो वो कितना उड़ेगा? 10 फीट, 20 फीट. सो दैट इज नॉट अ ग्रेट व्यू टू सी. लेकिन सोचो कि डोमेस्टिक पिजन जो है वो कभी इतनी ऊंची उड़ान जितना कि हॉक उड़ता है, जितना कि शाहीन उड़ता है, जितना कि बाज उड़ता है,
उतनी ऊंची उड़ान अगर एक कबूतर ले तो लोग कितने जो है वो एक्साइटेड होंगे उसको देखने के लिए। People would come out of their homes, out of their all busy schedule to have a view this कि ये कबूतर इतना ऊंचा उड़ा। तो कहती है कि मैं भी इस इंटॉक्सिकेशन से, इस अल्कोहल से, इस ड्रंकननेस से इतना ऊंचा उड़ना चाहती हूं that I would be leaning against the sun, कि मैं सूरज के पास जाके सूरज के साथ टेक लगा के बैठूं, और जब मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगी तो इवन सिर्फ्स विल कम टू सी मी, इवन द सेंट्स विल कम टू सी मी। सो एज वी फिनिश दिस पोएम वी अंडरस्टैंड कि ये जो इंटॉक्सिकेशन है, ये जो इनएब्रिएटनेस है, ये जो लिकर है, ये एक इस तरह का लिकर है which will take her higher and higher and higher, which means that she has a close relationship or connection with God. And it has been a very common theme not only in English poetry but also in Urdu poetry, where people use this word liquor, sharab, in a very positive manner, not in a negative connotation. So that was the poem I Taste a Liquor Never Brewed. I hope that this lecture was helpful for you and you were able to understand this poem.